हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 1 पोरिफेरा टॉपिक चल रहा था आपका। आज हम लोग पोरिफेरा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस that we will learn. Okay, this is an important topic. On the basis of spicule shape and size, poriferans are divided into many categories. So you need to understand first the different types of spicules found in poriferans. So students, title of the topic is spicules in sponges. जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्पिक्यूल स्पॉन्जेज में कैलकेरियस हो सकते हैं, सिलीसियस हो सकते हैं, ओके, और कोलेजिनस प्रोटीन से बने हो सकते हैं, यानी स्पॉन्जिन। So all these structures, materials that are found in spicules give support to the sponge body. So the sponges are supported by spicules, and spicules can be made up of calcium carbonate in case of calcareous, silicon dioxide in the case of siliceous, and spongin fibers in the case of demospongy. Okay. The cell कौन secrete कर रहा है इनको? Cells, specialized cells, which are present in mesohyal layer. The cells secreting spicules are termed as sclerocyte. आपको पता है, बता चुका है, sclerocyte. And those producing spicule fibers are termed as spongocytes. Spongocytes are secreting spongin fibers. Sclerocytes are secreting calcareous and siliceous spicules, depending on the species they belong to. And both of these cells derive from कौन से सेल से? आर्कियोसाइट से और अमीबोसाइट। आर्कियोसाइट्स। ठीक। सवाल उठता है इन स्पिक्यूल्स का फंक्शन क्या है, क्यों यह इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जेज के लिए? नंबर 1, एक तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिक्यूल्स फाउंड इन देम we can identify the species. So they are important in species identification. आइडेंटिफिकेशन। लेकिन स्पॉन्जेज को स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है? स्पॉन्जेज जो है स्पिक्यूल्स को स्पीसीज की ह्यूमंस उसके स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या सिक्रीट कर रहे हैं बाय दीज स्पेशल सेल्स? नहीं, उनको तो अपने काम के लिए उन्होंने स्पिक्यूल्स को सिक्रीट किया, अपने बेनिफिट के लिए।
क्या बेनिफिट है? दे मेंटेन द शेप, they are maintaining the shape and its role in defense is also there. So there are, बाद में अभी हम बताएंगे आपको, दो तरह के स्पिक्यूल्स हैं साइज के आधार पर, मेगा स्क्लियर्स एंड माइक्रो स्क्लियर्स. So mega scleres are maintaining the shape of sponges, and whereas micro scleres are having the role in defense. So they are maintaining the shape, इसलिए एक मैंने लगा दिए दोनों को, maintaining the shape and preventing, they maintain the shape and prevent predation. मेगा स्क्लेयर्स का रोल है बॉडी को सपोर्ट देने में, और माइक्रो स्क्लियर्स का रोल है डिफेंस. ओके, so these are the functions of spicules in sponges. सवाल उठता है स्पिक्यूल को फिर डिफाइन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे स्पिक्यूल्स के बारे में? स्पिक्यूल्स आर बेसिकली microscopic crystalline structures which gives the sponges their rigidity and form. Okay, spicules consist of spines or rays that radiate from a point. यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो ये वाला पॉइंट भी कि these are secreted by special mesenchymal or mesohyal amoebocytes called scleroblast cells. ये वाला ऐड कर देना. तो सवाल उठता है कि स्पिक्यूल के कितने वेराइटीज हैं? बहुत डिफरेंट वेराइटीज है, कई तरह के स्पिक्यूल्स हैं. ओके, सो वी विल स्टडी देम वन बाय वन. तो मटेरियल के आधार पर यह स्पिक्यूल्स किस मटेरियल के बने हैं इतनी बार चर्चा कर चुके हैं, आपको याद हो गया होगा. तीन तरह के हैं. So first criteria is on the basis of type of deposit, या कह लीजिए on the basis of type of material
They can be divided into two types. One is calcareous spicules. Number two, siliceous spicules. All kinds of spicules have a core of organic material around which either calcium carbonate or colloidal silica is deposited. अगर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हुआ है then that will be calcareous spicule. अगर colloidal silica has been deposited over the core organic matter, then that spicule is called as siliceous spicule. Okay. Calcareous spicule में the material in this type of spicule is calcium carbonate or calcite. Material is calcite. And this is the characteristic of the sponges of class Calcarea. Siliceous spicules में the material in this type of spicule is colloidal silica or silicon. Silicon dioxide आप लिख सकते हैं. And this type of spicule are the characteristic of sponges belonging to class Hexactinellida, siliceous spicules. So this is one criteria of the classification of spicule, that is on the basis of the type of material of which it is made up of. Another criteria, the second criteria, on the basis of their size and function. Basis of size and function. Under this heading, spicules are of two types. बता चुके हैं आपको, मेगा स्क्लियर्स माइक्रो स्क्लियर्स. Mega scleres are larger spicules. These are involved in providing support and they are determining the shape of the sponge. These are the larger spicules. And they constitute main skeleton of the sponge body. Microscleres, these are small spicules. Okay. And they are present in mesohyl. They are responsible for providing defense to the host against its predator. ठीक. तीसरा क्राइटेरिया है on the basis of number of axes and rays. Of number of axes, एक से ज्यादा axes हो सकते हैं. Axis singular है, axis plural है. Number of axes and rays. तो स्पिक्यूल जो है क्योंकि डिपॉजिट होने के बाद इसका ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, मटेरियल इस पर फर्दर
One deposit, second deposit, another deposit. It keeps on depositing. So various kinds of shapes in different sizes they are acquired. पहले हम बड़े वाले स्पिक्यूल्स की बात करेंगे, उसके बाद छोटे वाले स्पिक्यूल्स की बात करेंगे. यानी मेगा स्क्लियर्स में किस तरह के एक्सिस एंड रेज हैं और माइक्रो स्क्लियर्स में भी किस तरह के एक्सिस एंड रेज हैं और उनके आधार पर कितनी वेराइटीज हैं. ओके, सो सी, so spicules here on the basis of this, because they occur in several forms, like simple rod form or in the form of forks. इतना ही नहीं, एंकर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं. सोवेल्स, सोवेल कहते हैं उसको, कुदाल जैसा होता है, एक बेलचा समझिए, सोवेल्स. स्टार्स, प्लूम्स, कई तरह के फॉर्म हो सकते हैं, एटसेट्रा. So the spicules forms that depend on the presence of number of axes, you can see in this figure, and rays, they are divided into these forms which I'm going to discuss now. Various forms. So सबसे पहले हम मेगा स्क्लियर्स में देखेंगे, जो बड़े वाले स्पिक्यूल्स हैं उसमें कितने डिफरेंट तरह के एक्सिस एंड रेज हैं और उनके आधार पर उनका टाइप क्या है. क्योंकि मेगा स्क्लियर्स आर द larger skeletal spicules that constitute the chief supporting framework of the sponge. Okay, and under this heading, megascleres are of 5 types, 5 general types. Are seen. Okay, 5 general types of megasclere spicules are seen, are found in sponges. उनके नाम हैं क्या? मोनैक्सोन, मोनैक्सोन, मोनैक्सोन. Number 2, टेट्राएक्सोन, या इसको कहें टेट्राक्सोन, टेट्रैक्सोन. थर्ड, ट्रायोक्सोन्स. फोर्थ, पॉलीएक्सोन्स. फिफ्थ, स्फीयर्स. ठीक है, एक और होता है जिसका नाम है डेस्मा. ओके, अब इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं. मोनैक्सोन, ये मोनैक्सोन में भी वेराइटीज है, इसके भी कई प्रकार हैं. पहले मोनैक्सोन को समझिए. मोनैक्सोन्स आर the kinds of spicules. These are monaxons, which are formed by the growth along one axis only. इसमें ग्रोथ जो है सिर्फ एक ही एक्सिस के along हुआ है. They may be straight, needle-like, or rod-like, or may be curved.
You can see in this picture, this A, the growth is in one axis. You can observe here. Okay. And in direction. Here you can see in A, it is unidirectional growth. In B, this figure में आप देख रहे हैं एक्सिस एक ही है, बट द ग्रोथ डायरेक्शन इज बाय, दोनों तरफ बाय डायरेक्शनल ग्रोथ है. सी में भी बाय डायरेक्शनल ग्रोथ है, बट इट इज कर्व्ड. डी ऑल्सो बाय डायरेक्शनल ग्रोथ, बट इट इज present with the knob and hooks are present in them, knobs. So A, B, C, D, ये चारों जो हैं A, B, C, D, ये हैं मोनोएक्सोन्स के वेराइटीज. Monaxons के varieties. Monaxons are those spicules which are formed by the growth along one axis only. Okay. They may be straight, needle-like, or rod-like, or they may be curved. Their ends may be pointed or hooked or knobbed. And this type of spicule belonging to megascleres can be of both type, calcareous and siliceous. So you can see here ABCD में different तरह के spicule हैं, लेकिन ये चारों monoaxon हैं, monaxon हैं. So the monaxon spicules are further divided into two kinds. Simple करके हम बता रहे हैं आपको. पहला हो गया monactinal, दूसरे का नाम है डायक्टिनल. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ का. एक्सिस एक ही है, बट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट इन दिस, इन बोथ ऑफ दिस. मोनैक्टिनल में the growth of the spicule takes place only in one direction. Example A. See, this is the center, and from this center the growth is happening. So the newer material are added towards this tapering point. It is not growing towards the blunt point, blunt end. Direction of growth is single. Growth of the spicule takes place here in only one direction. That is monactinal. आप पॉइंट नोट बना लेना. Okay. Diactinal में growth of the spicule takes place in both direction. See, in B, C and D you can observe. B, C, D में growth of the spicule is in both direction. And those directions are the opposite ends of the axis. Okay. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? ठीक, यहाँ हो गया सिंगल डायरेक्शन ग्रोथ. यहाँ हो गया डबल डायरेक्शन ग्रोथ. Now coming to this variety, tetraxons. ABCD समझ गए आप? टेट्रैक्सॉन. सी में क्या है? कर्व्ड है, सी शेप्ड है. डी क्या है? नॉब लाइक है और इसमें हुक्स है. Tetraxons. Tetraxon spicules are also called
टेट्रैक्टाइन्स एंड क्वाड्रीरेडिएट्स, इसको हम टेट्रैक्टाइन्स भी कहते हैं, टाइन्स, और क्वाड्रीरेडिएट्स भी कहते हैं। क्वाड्रीरेडिएट्स, 4 रेज निकले हैं इसलिए क्वाड्रीरेडिएट्स, नाम भी है टेट्रैक्सोन। They consist typically of 4 rays, and all these rays are not in the same plane. The rays are radiating from a common point. You can observe in this E. This is the common point, and from the common point 4 rays are emerging, and they are radiating in different planes. 3-dimensionally, if you imagine of this, then all these axes are in different planes. Okay, but all 4 of them are radiating from a common point. So when these 4 rays are unequal or more or less equal, when they are, which you can observe in this G, 4 rays are not exactly equal, but more or less they look like similar in length. In this case, the spicule is called as calthrops. तो ये G हो गया calthrops. टेट्रैक्सॉन का ही वेराइटी है calthrop. इसी का एक वेराइटी और है F वाला. क्या कह रहा है कि जब एक सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला कोई एक रे गायब हो गया, इसमें डिसइंटीग्रेट कर गया, उसके बाद जो बच गए 3 रेज, उसको कहते हैं ट्राइरेडिएट. तो जब एक रे का लॉस होता है बाय लॉस ऑफ वन स्मॉलर रे, ये सबसे छोटा वाला रे है ई में, अगर इसका लॉस हो गया then it will result into a different kind of spicule. उसका नाम है डाइन, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, डाइन. When small ray are, when the loss of small ray takes place in tetraxons, then the name is then die-in. Okay. If the elongated ray is lost, then that spicule is resulting into a triradiate or triactinal spicule. This one is F1 is triradiate. Loss of elongated ray. इस पिक्चर को देखने से आपको लग रहा होगा कि हियर देयर इज अ लॉस ऑफ स्मॉल रे, लेकिन इसके स्केल पर मत जाइए.
Loss of small ray in tetraxon is called as die-in, and the loss of elongated ray in tetraxon is called as triradiate. This is the loss of elongated ray. Okay. And it is this loss of one ray is a characteristic of calcareous sponges. Third one, EFG हो गया, कैल्थ्रोप कहते थे। तो इसके कितने वैरायटी हो गए टेट्राक्सोन के आपने पढ़े? इसको टेट्रैक्टिन्स और क्वाड्रिरेडिएट्स भी कहते हैं। एक वैरायटी हो गया कैल्थ्रोप्स, दूसरा वैरायटी हो गया डाइन, तीसरा वैरायटी हो गया ट्राइरेडिएट। तीन वैरायटी हैं टेट्रैक्सोन्स के। नाउ कमिंग टू ट्राइएक्सोन्स। सिंपल है, कंसेप्ट आपको समझते जाना है। ट्राइएक्सोन्स को हम हेक्सैक्टिनल स्पिक्यूल भी कहते हैं। हेक्सैक्टिनल, इसी आधार पर हेक्सैक्टिनिलिडा क्लास है। उसमें ट्राइएक्सोन सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं, सिलिका स्पॉन्जेज हैं, उनमें ट्राइएक्सोन पाए जाते हैं। ओके, तो ट्राइएक्सोन एक्सिस 3 है, but from the center point here you can observe in figure H, this is one axis, second axis and third axis. First axis, second axis and third axis, जिसकी वजह से 6 रे 6 रेज एक सेंटर पॉइंट से इमर्ज्ड हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, इसीलिए नाम है हेक्सैक्टिनल स्पिक्यूल्स। ठीक, and it consists, but this one is made up of consisting of 3 fundamental axes, and these axes are crossing at right angles, as a result of which 6 rays are produced, and they are extending at right angles from a central point. Okay, this is the basic type of hexactinal spicule, and from this deviation many possible modifications are there, which arise by reduction or loss of rays, branching and curving of rays, okay, development of knobs, etc. So there are many varieties in this. I'm not going in that. ट्रैक्सोन, बस इतना ही जान लीजिए, ट्रैक्सोन स्पिक्यूल्स are characteristics of class Hexactinellida. One second. ठीक है, ये समझ गए आप। ट्रैक्सोन के एच वाला फिगर जो है वो ट्रैक्सोन का है, नाम लिख देते हैं ट्राइएक्सोन। ए बी सी एंड डी थे आपके मोनैक्सोन। ई एफ जी है आपके टेट्रैक्सोन्स। आप कंफ्यूज नहीं करोगे टेट्रैक्सोन्स एंड ट्राइएक्सोन्स में।
दोनों डिफरेंट है। ठीक, ट्राइक्सोन्स आर फाउंड इन हेक्सैक्टिनिडा एंड टेट्रैक्सोन्स आर फाउंड इन कैलकेरिया. Now coming to polyaxons. See, it's very simple. Polyaxons पे several equal rays radiate from a central point. You can observe here, if this is the central point, several equal rays are radiating from it. In this one, I way, the end is blunt, while in J, the end is tapering. इसमें भी varieties हैं, सीधा याद रखिए, ये है वे polyaxons. Several equal rays radiate from a central point. That's all. ठीक, स्फीयर्स यहाँ पर फिगर में नहीं है, बट आप जान लीजिए कि these are rounded bodies in which growth is concentric around a center. This spicule is not pointing or blunt. Instead, it is round. It is a round body and growth is in concentric ring around a center. इसका ग्रोथ सेंटर से आरंभ होकर के ऐड होते जा रहा है कंसेंट्रिक रिंग में. कंसेंट्रिक रिंग उसको बोलते हैं, सेंटर एक ही है बट रेडियस डिफरेंट है. इस तरह करके कंसेंट्रिक रिंग बनते जाएगा एज द स्पिक्यूल एजेस. जैसे जैसे इसका ग्रोथ होगा ये बड़ा होते जाएगा. फिगर अच्छा नहीं बन रहा. लास्ट डेस्मा. डेस्मा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेगास्क्लियर which occur in a number of sponges. So desma is basically an ordinary minute monaxon. छोटा मोनेक्सॉन है, माइन्यूट मोनेक्सॉन, और उसके ऊपर सिर्फ मोनेक्सॉन ही नहीं, छोटा या कोई, क्योंकि देखिए माइक्रो स्क्लियर्स में आप मेगा स्क्लियर्स में ये सब वेराइटीज देखें, माइक्रो स्क्लियर्स में ये वेराइटीज भी हैं. ठीक है, छोटा होगा मोनेक्सॉन, छोटा होगा टेट्रैक्सोन, छोटा होगा ट्रायक्सोन, हो सकता है माइन्यूट वंस. लेकिन अभी आएंगे माइक्रोस्क्लियर्स पर. माइक्रोस्क्लियर्स भी दो मुख्य तरह के होते हैं, वो डिफरेंट है. तो डेस्मा में अगर छोटा है मोनेक्सॉन या ट्राई रेडिएट और टेट्रैक्सोन स्पिक्यूल, उसके ऊपर सिलिका का डिपॉजिट हो जाना. माइन्यूट मोनेक्सोन है, माइन्यूट ट्राई रेडिएट हो या माइन्यूट ट्रैक्सोन्स हो, ट्रैक्सोन हो. ओके, और इन माइन्यूट स्पिक्यूल्स के ऊपर सिलिका का लेयर डिपॉजिट हो जाए इरेगुलरली, then that one is called as desma. So desma is equal to minute monaxons, और ये दो दो तीन नाम लिए, ट्रायरेडिएट मोनेक्सोन प्लस स्पिक्यूल प्लस irregular deposition of
सिलिका इज इक्वल टू डेस्मा। तो इरेगुलर, इसमें जो माइन्यूट स्पिक्यूल्स है इसको हम क्रेपिस भी कहते हैं। डेस्मा इज इक्वल टू क्रेपिस प्लस इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ सिलिका ओवर इट। ओके, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं माइक्रोस्क्लियर्स में। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एक्सिस एंड रेज। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सिस एंड रेज, इसको कैसे लिखोगे? इसमें पहला पॉइंट कर दोगे मेगा स्क्लियर्स, दूसरा माइक्रो स्क्लियर्स। मेगा स्क्लियर्स में ये है, माइक्रो स्क्लियर्स अभी हम लोग देखेंगे। इधर मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेंगे। दूसरा माइक्रो स्क्लियर्स। जान लीजिए, दिस ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। Microscliers, as you already know, are the smaller flesh spicules that occur throughout the mesenchyme or mesohyl, which provide the defense against the predation. ठीक है, चूंकि ये कोई सपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बनाते हैं, फिर भी you may see different types of it. They are involved in defense. The two major types which are seen in this category are, number one, spires, and number two, asters. Spires are curved. These spires are, पहले spires चर्चा कर लेते हैं. These are curved. Okay, in one plane. जैसे आप इमेजिन करो, इस तरह से curved. In one plane, it is curved. But साथ ही साथ ये स्पायरली ट्विस्टेड भी हैं इन अनदर प्लेन। सपोज करो ये 3 डायमेंशनली इमेजिन करो, ये एक कर्व्ड प्लेट है मान लो, इसको आप साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो ये कर्व्ड प्लेट नजर आ रहा है। इसको जब आप फ्रंट से देखोगे, सामने से, तो इस तरह से नजर आएगा। भले ये हिस्सा अंदर धंसा हुआ है और ये हिस्सा बाहर, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। सो इट इज spirally twisted in this plane, and they exhibit many shapes because of this. The most common type are the C-shaped forms. Curved C-shaped form, इसका नाम है सिग्मा। स्पायर का वेराइटी है, कर्व C-shaped form सिग्मा। स्पायर का डेफिनेशन क्या हुआ अभी हम बता दिए। स्पायर्स आर कर्व्ड इन वन प्लेन एंड स्पायरली ट्विस्टेड इन अनदर प्लेन। इसमें सबसे कॉमन टाइप है C-shaped फॉर्म, जिसका नाम सिग्मास है। बो शेप्ड फॉर्म भी होता है।
जिसका नाम है टॉक्सास। यहाँ पर हम इसका वैरायटी लिख देते हैं। सिग्माज, टॉक्साज, TOXAS, ठीक। चेलाज, चेला, चेलाज। सिग्मा हो गए सी सेप्ट। बो सेप्ट नाव की तरह है। नहीं, नाव तो बोट होता है, बो चप्पू की तरह है। सेप्ट वंस आर टोक्साज एंड द चेलाज विथ हुक्स, रिकर्व्ड हुक्स। चेलाज में हुक्स है। ठीक है। तो these are spires, which is an example of microsclear which are found in mesohyl ester, and these are providing the defense against the predation. Esters have different types. सबसे पहले एक है स्मॉल सेंटर एंड लॉन्ग रेंज। स्मॉल सेंटर एंड लॉन्ग रेंज। छोटे, आप कहोगे ये पॉलीएक्सोन की तरह मिल रहा है। पॉलीएक्सोन तो बड़ा वाला स्पिक्यूल है, ये छोटा स्पिक्यूल है। इसमें छोटा में भी इसका सेंटर छोटा है और उस छोटे से बड़ा है इनके रेंज। ओवरऑल ये छोटा ही है, तो द स्मॉल सेंटर एंड इलोंगेटेड रेंज दे हैव। स्मॉल सेंटर एंड लॉन्ग रेंज। ठीक। इसको हम ऑक्सी एस्टर्स भी बोलते हैं। इसका नाम है, एस्टर का वैरायटी है ऑक्सी एस्टर। दूसरा वैरायटी है लार्ज सेंटर्ड फॉर्म। सेंटर लार्ज है एंड रेंज आर स्मॉल। Okay, in which rays are reduced to small projections from the spherical surface. इनका नाम है स्टेरा एस्टर्स। क्या हो गया इनका? स्मॉल सेंटर है, लार्ज सेंटर, शॉर्ट रेज। The name is ster esters. STERRASTERS. So in this, rays are reduced to small projections from the spherical surface. Okay.
So students, in this lecture, I have concluded the spicule part of the sponges. If in the examination it is asked that about skeleton of sponges, you can write these things in that. Not only this, you have to mention about mesohyal layer also, spongin fiber also. This is only about spicule, which is part of the endoskeleton. Okay. Students, I'm concluding now. In the next class, we will learn about reproduction in Porifera. After that, this topic will be over. Thank you.